We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Start recording. Okay, students. So my name is PALAK PATEL. I am a faculty in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, NAVSARI, and I am professor in the civil department. So now we are discuss about moment area method. Read the topic: calculate slope and deflection by a moment area method on a cantilever beam. Part 1. इसके 2 parts और आएंगे. There will be more 2 parts. Okay. The moment area method. The moment area method presented by Charles E. Greene, who find the moment area method, who represent the moment area method. The moment area method is suitable when you find some certain points. Okay. If there is a one beam, you can understand there is a one beam. Okay. Now you want to find a slope at this point, at this point, at any one point of the beam. So you don't need to analyze the whole beam. You just need that portion which is important for you. So this time moment area method is useful for find some certain portion to slope and deflection. Okay. There is a 2 theorem in the moment area method. First moment area method theorem says that the change of slope between any 2 points on an elastic curve is equal to the net area of M upon EI diagram between these points. In a simple word, I can say that if you want to find a slope between 2 points, then you have to find M upon EI diagram, and then M upon EI diagram area, net area between these 2 points. So you can find a slope. The second moment area theorem says that the displacement of point B from the tangent A is equal to a moment of M upon diagram A and B taken about B. First we find a slope, second we found a displacement, by which moment of M upon EI diagram taken about B means 2 points है, sorry ये bilingual जाएगी. There is a 2 points between A and B, so you have to find a displacement at a B, at a B point. Okay. So you draw M upon EI diagram, then you have to find a moment from A to B, from B to A, moment from B to A point for find a displacement at B point. Understand? Okay. Next, A find CG and area of given figure. This is the M upon EI diagram. You can see there is a one triangle shape which is moment diagram for a cantilever beam resist a point load at a free end. This time we got at this time of first figure. You can see it there. This time of M upon EI diagram you can find it. Okay. So for you find a slope, you have to need a area of this triangle. So look at the figure. Below of the figure you can see the 1/2 L into H, which is the area of triangle. Okay. Then second time you have to find a displacement.
Net displacement means we want the moment of m upon a diagram. Now how can you find a moment? Moment means simple, net area of m upon a diagram multiply by distance. Which distance? Distance means CG. CG means center of gravity of this figure. You can see the triangle. Okay, so where is the CG? If we see at the B section, the free end point, the twice L by 3, this is a distance between CG and B point, and the opposite direction L by 3. Same thing the second figure. This is a simply supported beam with a UDL diagram, UDL load. So we got a parabolic graph equation, area equation. We can say the below of the figure, 2/3 L into H. Then after CG point, 5 L by 8 and 3 L by 8. There is a one more thing. Listen, there is a length is twice L, means बीम की लेंथ ट्वाइस एल है. अगर उसे हाफ करूँ, इफ आई वॉन्ट टू हाफ इट, देन इट विल बी एल. If I say there is a length between two beam, between A and B point is only L, then what is the half? L by 2. Okay, simple. There is a third. This is a cantilever beam with a point load. UDL, cantilever beam, UDL on entire span. UDL on entire span. You can find area at the right hand side, L by 3, L into H. CG, excuse me, sorry. Okay, CG नहीं, CG 3L by 4, L by 4. Both these equations and value, please remember this thing. This whole thing will be used in your examples. So shall we start the examples? First example, you can see there is a one cantilever beam with a point load at free end 30 kN, 2 meter length. Read the equation. Determine slope and deflection at the free end of a cantilever beam shown below. IXX और E आपको दिया हुआ, you have to find I and E in your example. That is the first example. Let's see. There is a video, just show it and try to solve it. Okay students, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल रीड कर लिया. आपको एग्जाम में क्या कहा गया है? ये कैंटिलीवर बीम है, उसके बी पॉइंट है. हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप, डिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कैंटिलीवर बीम का एम अपॉन ए डायग्राम ड्रॉ करना है. एम अपॉन ए डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एम डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मतलब मोमेंट डायग्राम. बहुत ही सिंपल है. एक रेफरेंस लाइन है. अब इस पॉइंट मतलब ये 30 किलोमीटर का जो पॉइंट है, उसकी वजह से यहाँ पे कितनी मोमेंट जनरेट होगी? तो वो ये पॉइंट जो हमारा वो होगा 60 मीटर. अंडरस्टैंड? अब हमें डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है? ये एम क्या है हमारा 60. ये डायग्राम में ड्रॉ करना है, मतलब सेम डायग्राम ड्रॉ करो. यहाँ पे ले लो 60, ये माइनस
डायग्राम कौन सा है हमारा? मोमेंट डायग्राम। सेकंड डायग्राम है हमारा ये। अब हमें इन दोनों की जरूरत है, हमें वैल्यू लानी है इस डायग्राम से m अपॉन ये डायग्राम से, बाकी ये दोनों में इरेज कर देना। नेगेटिव वैल्यू हमें फाइंड करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं स्लोप। ठीक है, थीटा टी। अब स्लोप फाइंड करना है तो हमने पहले थ्योरम देख चुका है कि स्लोप मतलब ये जो डायग्राम है एरिया बी पॉइंट का स्लोप मतलब थीटा बी में इसका माइनस वैल्यू से एरिया फाइंड करें। इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ये, मतलब कितनी हुई स्लोप हमारा 60 ये हमारा स्लोप हुआ। अब हमें E और I की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। हमारे पास E की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵ I की वैल्यू है 6 × 10⁷। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी। कौन सा इक्वेशन? ये थीटा p वाला। इसमें वैल्यू पुट कर दे 60 कितने आती है? कैलकुलेट कीजिए। कैलसी देखिए देखिए आपको 0.05 मीडियन। ये आ गया हमारा स्लोप। ये हमारा स्लोप आ गया। अभी सेम इक्वेशन में हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन में हमें क्या करना है? मोमेंट फाइंड करना है। मतलब सिंपल समझो, इस एरिया की ये जो ट्रायंगल है उस एरिया का सीजी जो हम आगे कर चुके हैं। अभी मैंने आपको ट्रायंगल की फिगर दी है, पैराबोला की फिगर दी है, वो सारी फिगर के मुताबिक हमें इस सीजी को फाइंड करना है और सीजी को मल्टीप्लिकेशन करना है इस ट्रायंगल के एरिया के साथ। समझ में? मतलब हमारा डिफ्लेक्शन